Hi everyone. I welcome you all to the lecture series Mastering Billion Section Page by Page. So, in this lecture series, we covering this textbook. We have simplified this textbook into a very simplified way, and so that it is easy for you to cover your syllabus, right? So, if you are listening to this lecture, you don't need to go back to the textbook and read that. It is more than enough, right? So we have already covered the thyroid. Now I'm going to start the parathyroid, and in which the first lecture will be surgical anatomy and physiology. I'm Dr. Shailesh Gupta. Okay. So what I'm going to cover, I'm going to cover parathyroid embryology, anatomy, histology, and we also going to cover parathyroid physiology and calcium homeostasis. The first topic for today is parathyroid embryology, right? So as same as other lecture, so there will be few pre-test and followed by content, and then the answers will be given, right? So I would request student to please be active in the lecture, and if possible, please write the answer of the pre-test. This will help you to keep your interest in the lecture, right? So first question for today is the superior parathyroid glands develop from third branchial pouch, fourth branchial pouch, second branchial pouch, and choice number D, fifth branchial pouch. Question number two, the thymus gland share an embryological origin with superior parathyroid glands, inferior parathyroid glands, thyroid glands, and cricoid cartilage. Question number three, ectopic superior parathyroid glands are most commonly found in the thymus, mediastinum, skull base, or nasopharynx. Question number four, the most common location for the inferior gland is behind the esophagus, within the 1 centimeter of the inferior thyroid artery, reclinal crossing, skull base, or in the posterior mediastinum. Okay. So again, I would request students to please interact, interactive in the class, answer the pre-test, and if you are answering it wrong, it is more better because you're going to get the answer in the same time only. So that's a great thing. And if you know the answer, this means that you already aware of the fact. Okay. So development origin, if I start with the very basic of the parathyroid gland embryology. So superior parathyroid gland originates from the fourth branchial pouch along with thyroid gland, and inferior parathyroid gland and thymus arise from the थर्ड ब्रेंकल पाउच। तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान देने वाली हैं। एक तो सुपीरियर थायराइड सुपीरियर होने के बावजूद भी नीचे से ओरिजिन कर रहा है, और इंफीरियर ऊपर से ओरिजिन कर रहा है। इंफीरियर जो राइज कर रहा है वो राइज कर रहा है थाइमस के साथ, और सुपीरियर जो राइज कर रहा है वो राइज कर रहा है थायराइड के साथ, राइट। एंड मूविंग ऑन टू लाइक बेसिकली हमारे पैराथॉइड माइग्रेट करते हैं ओरिजिन के बाद। So if we say about superior parathyroid gland, they remain near the origin, and 80% lie near the posterior aspect of the upper or middle thyroid lobe at the cricoid cartilage level, whereas 1% of the superior glands are ectopically located in the paraesophageal or retroesophageal space. ठीक है। सो बेसिकली सुपीरियर ग्लैंड्स की माइग्रेशन इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। दे रिमेन नियर देयर ओरिजिन, near the posterior aspect of the upper or middle thyroid lobes at the cricoid cartilage level. And 1% of superior thyroid glands are also seen ectopically in the paraesophageal or retroesophageal space. ठीक है, बट अगर thyroid gland enlarge कर जाता है, then may descend into the tracheoesophageal group, potentially lying below the inferior gland. This is important. So, like अदर एक्टोपिक लोकेशन जो हो सकती है वो मिडिल पोस्टर मिडासनम और आइटोपल्मोनरी विंडो हो सकती है सुपीरियर ग्लैंड्स की। अगर मैं इन्फेरेटाइड की बात करूं, ये थर्ड से ये बेसिकली ये अराइज होते हैं। बेसिकली इनकी माइग्रेशन ज्यादा होती है। इन्फेरेटाइड ग्लैंड माइग्रेट कॉर्डियली विद इन द थाइमस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। थर्ड से अराइज होता है इन्फेरेटाइड ग्लैंड, लेकिन नीचे माइग्रेट कर जाता है, इसलिए नीचे चला जाता है सुपीरियर से वो। ठीक है। सो they mostly commonly found within the 1 centimeter of the inferior thyroid artery and recurrent crossing, and 15% of thyroid glands are located within the thymus because
थाइमस और इंफीरियर ग्लैंड का ओरिजिन टुगेदर है। ये आपको नहीं भूलना है, और बेसिकली थर्ड ब्रेंकियल बॉडी से ओरिजिन है उसका। ठीक है। So, variability of the infrared gland position because of longer migration. Infrared glands have a more variable location, and undescending gland may be found near the skull base at the angle of mandible, superior to superior parathyroid gland, because यहाँ पे हमारा जो inferior है वो थर्ड ब्रेंकियल बॉडी से राइज कर रहा है, सुपीरियर फोर से कर रहा है। तो अगर वो मोबिलाइज नहीं होगा तो वी गोइंग टू फाइंड एट द अबव द पोजिशन ऑफ parathyroid gland. ओके। सो इट इज ऑल्सो अ फैक्ट समटाइम पैराथायरॉइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट विद इन द थायराइड। थायराइड के अंदर ही प्रेजेंट होंगे, वो बहुत कम होता है, 2% केसेस के अंदर होता है। सो हियर वी कैन सी अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग अ पैराथायरॉइड embryology. It is a figure which demonstrate a few pharynx of 8 to 10 millimeter embryo, एंड बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो थर्ड ब्रेंकल बॉडी है और फोर्थ ब्रेंकल बॉडी है, वहां से हमारा इंफीरियर और सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड अराइज हो रहे हैं। थर्ड हमारा यहाँ पे इंफीरियर अराइज हो रहा है, बस थाइमस अराइज होता है। फोर्थ से हमारा थायराइड अराइज होता है। द लोअर पैराथायरॉइड अराइव फ्रॉम द थर्ड ब्रेंकल पाउच एंड माइग्रेट विद द थाइमस, वेयर द अपर पैराथायरॉइड ग्लैंड अराइव फ्रॉम द फोर्थ ब्रेंकल पाउच एंड द लाइंग क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द अल्टीमो ब्रेंकल बॉडी। ठीक है, ये नहीं भूलना आपको। तो जहाँ पे हमारा सुपीरियर का वर्ड आएगा, वहां पे आपको फोर्थ ब्रेंकल पाउच याद रखना है, आपको वहां पे अल्टीमा ब्रोंकियल बॉडीज याद रखनी है आपको। सो नाउ द पोस्ट टेस्ट, द superior patellar gland arise from the forebranchial body. Question number two, the thymus share an umbilical origin with the inferior pituitary glands. Question number three, ectopic superior pituitary glands are most commonly found in the mediastinum. The most common location for inferior thyroid gland is within the 1 centimeter of the inferior thyroid artery and RL crossing. इन दोनों क्रॉसिंग के आपको 1 सेंटीमीटर के आगे पीछे ही मिलेगा ये। So now I covered the anatomy and histology of the parathyroid glands. So, vacation question, if I would appreciate if you can write the answer in the chat box. In adults, normal parathyroid glands appears gray, white, golden yellow, dark red color. Question number two, the typical weight of each parathyroid gland is 10 to 20 microgram, 30 to 40, 40 to 50, or 100 microgram. Question number three, blood supply of the parathyroid gland is primarily from the interparotid, inferior thyroid, superior thyroid, or external carotid artery. Question number four, superior gland may be supplied by external jugular vein, superior thyroid artery, carotid, or vertebral artery. Question number five, venous drainage of PTH gland is systemic veins or epithelial thyroid veins, interjugular vein directly, or bacocephalic vein. Histologically, the main cell type in the parathyroid gland is oxyphil cells, chief cells, C cells, or follicular cells. Question number seven, supernumerary parathyroid gland were found in what percentage? 5 percentage, 10, 13, or 30. Or question number eight, chief cell produce thyroxine, calcitonin, PTH, and vitamin D. Oxyphil cells are mitochondrial rich, acidophilic, clear cells, small, only infant or fat cells. Arrangement of the parathyroid cells are clusters only, sheets, tuberculi, or there is no pattern. So, guys, basically, most individuals have four parathyroid gland. Superior parathyroid glands are located dorsal to the rectal energy nerve at the cochlear cartilage level, whereas inferior thyroid glands are located ventral to the rectal energy nerve. This is important, right? Okay. In newborns, they are basically gray and semi-transparent. Whereas in adult, they are golden yellow to light brown, and colors vary with cellularity, fat content, and vascularity. And they are often embedded in the surrounding fat, making identification little challenging. Okay, they are usually ovoid shape and size is up to 7 millimeters, and approximately 40 to 50 microgram per gland is the weight. एंड ब्लड सप्लाई अगर हम ओवरऑल की बात करें पैराथायरॉइड की, तो तो मोस्टली सप्लाई जो होती है इंफेरियर आर्टरी की होती है, सुपीरियर भी और इंफीरियर भी। लेकिन स्पेसिफिकली मैं सुपीरियर ग्लैंड की बात करूँ, 20% सुपीरियर ग्लैंड रिसीव ब्लड सप्लाई फ्रॉम द सुपीरियर आर्टरी। तो सुपीरियर आर्टरी सिर्फ माइनर पेशेंट के अंदर, कुछ पेशेंट्स के अंदर सिर्फ पार्ट ऑफ सुपीरियर आर्टरी को देती है सप्लाई, वेर अगर मेन ब्रांच इंफेरियर आर्टरी है। ठीक है, एडिशनल सप्लाई में कम्स फ्रॉम द थायरॉइड आर्टरी,
vessel to trachea, esophageal, larynx, and mediastinum.